Good morning, you're watching Hornbill TV's Morning Pulse. Rahul Gandhi has raised concerns over the economic impact of the ongoing West Asia crisis. The leader of the opposition in the Lok Sabha said the conflict could cause significant damage to India's economy, pointing to volatility in the stock market and rising fuel prices. He questioned why the government was reluctant to hold a discussion in Parliament on the issue, calling it a matter of public interest. Gandhi alleged that the government was avoiding debate because it could expose the Prime Minister's position on the crisis and India's agreement with the United States. He also criticized Prime Minister Modi, claiming he was avoiding discussion in Parliament on the matter. गंभीर पाल साहब ने कहा कि एक्सचेकर का पैसा बर्बाद हो रहा है। आप लोग जब स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाए उस पर चर्चा कीजिए। 2.5 लाख रुपए पर मिनट का जो है नुकसान हो रहा है, ये गंभीर पाल साहब ने चेयर से बोला। क्या समझो आप? और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? यही हम मांग रहे हैं और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो जरूरी नहीं है? क्या फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी। प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। बता रहा हूं, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे। N. Ramachandra Rao, president of the Bharatiya Janata Party in Telangana, has accused the Indian National Congress of spreading misinformation over the West Asia conflict. He said Congress leaders, including Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge, were creating unnecessary panic about possible fuel shortages. Rao asserted that India has adequate oil and gas supplies and said fuel prices are being managed better than during the UPA government. Referring to the 2007 vote at the International Atomic Energy Agency, he also accused the Congress of aligning with the US position against Iran at the time. Meanwhile, Rao congratulated India's men's national cricket team for winning the ICC Men's T20 World Cup, calling it a proud moment for the country. Is bent upon spreading falsehood and create a fear psychosis among the public with regard to the ongoing war between Iran and US-Israel. In fact, they are spreading falsehood with regard to the oil reserves, which is false. India has sufficient oils. India has been taking oil from different countries, which before 2014 it was only 16 countries. Now we are purchasing oil from nearly 47 countries, including that of Russia. And the Congress party leaders, I don't know why they are spreading falsehood with the people. In fact, it was the Congress party which surrendered itself to US when they signed against Iran in IAEA conference in 2007. 2007 they signed against the when the UPA government was there. Manmohan Singh, Mr. Chidambaram, and then Chidambaram, and then the Indian delegation went and they signed against Iran. So they did it under US pressure then. So therefore, the Congress, whenever the Congress had ruled this country, they were under the pressure of some or other countries. But today, under Modi's leadership, India is independent, India is sovereign, India doesn't bow to anyone.
both Mr. Rahul and Kharge, they are trying to spread falsehood among the people. There will be no oil shortage, there will be no fuel shortage, there will be no gas shortage, and in fact the prices are better maintained than that of UPA government by the NDA government. So this talk of the pressure, acting under the pressure of US or any other country is humbug and baseless and has no credibility. Indian team which won the World Cup, in fact we retained the World Cup against New Zealand yesterday. I think this was one of the best games played by our Indian players. On behalf of the Bharatiya Janata Party, we congratulate the team, entire Team India, for playing this wonderful match. And Indian team has shown its mettle, its talent, and therefore India stands number one among the world in this T20 match, which made India proud in the field of cricket. And I, on behalf of the Bharatiya Janata Party, congratulate the entire team, and including the captain, vice captain, and the wicket-keeper. Naib Singh Saini, Chief Minister of Haryana, has said that people in Punjab are aware that the state will progress under the leadership of PM Modi and the Bharatiya Janata Party. Saini highlighted several welfare initiatives being implemented in Haryana under the Prime Minister's leadership, including an increase in the old age pension to Rs 3,200. He also criticized the Indian National Congress, alleging that previous Congress governments in Punjab had failed to respect and support the elderly. परंतु पंजाब के लोग अब समझ रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं और पंजाब के लोगों को मालूम है आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ही पंजाब को नंबर 1 का सूबा बनाएगा, जिस प्रकार से हम हरियाणा का बना रहे हैं। हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितनी योजनाएं चल रही हैं। अगर एक किसान की ही हम बात करें, किसान को हम कितनी योजनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जो हमने भावांतर भरपाई दे रहे हैं किसान को, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कितनी योजनाएं किसानों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। पंजाब के अंदर तो एक भी नहीं। हमने अभी वृद्धावस्था पेंशन वो देने का काम किया है, 3200 रुपए कर रहे हैं। अब इसने घोषणा की थी कि मैं 2500 रुपए करूंगा, अब तक नहीं करी। ये बजट भी चला गया, बजट भी चला गया आपके सामने। ये वहां का बुजुर्ग भी देख रहा है। ये वहां के बुजुर्ग की जो लिमिट इन्होंने लगा रखी वो 60,000 रुपए है, हमारे यहाँ 3 लाख रुपए है। ये 60,000 रुपए में कितने का आएंगे? और वो भी 1,000 रुपए उनको मिलते नहीं है, 6-6 महीने घूमते रहते हैं बुजुर्ग। बुजुर्गों का अपमान करती है। चाहे कांग्रेस सरकार थी पंजाब के अंदर, कांग्रेस ने भी हमेशा बुजुर्गों का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान किया है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, इसी बजट के अंदर कहा कि जो भी बुजुर्ग है 70 साल से ऊपर का, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी हो जाती है, उसको इलाज की चिंता नहीं है, सारा इलाज हमारी ये डबल इंजन की सरकार कराएगी। और मुझे खुशी है 154 करोड़ रुपया हमने जब से योजना लागू हुई है बुजुर्गों के इलाज के लिए दिया है। 5 लाख रुपए उन्हें भी दे रहे हैं। अब माँ बाप को चिंता नहीं है, परिवार को चिंता नहीं है कि वही बुजुर्ग को अगर बीमार हो गया, कोई दिक्कत आएगी कि परिवार को इलाज कराना पड़ेगा, उसके ऊपर निर्भर नहीं। ये सम्मान है बुजुर्ग का कि सरकार चिंता कर रही है कि अगर कई बार दिक्कत घर में आ जाती है, बुजुर्ग को समझ लेते हैं, परंतु सरकार बुजुर्गों के सम्मान के अंदर मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस ने अपमानित किया है बुजुर्गों को और अब आम आदमी भी कर रही है। The Pune Municipal Corporation has temporarily halted the use of gas-based crematorium furnaces in parts of the city after directions from the Ministry of Petroleum and Natural Gas to prioritize propane and butane supplies for domestic LPG consumption. Municipal Commissioner Naval Kishore Ram said the city has around 27 crematoriums, out of which 18 operate on LPG. Due to supply constraints, the civic body is discouraging the use of commercial LPG at these facilities to avoid shortages. He added that other cremation facilities remain available and the administration will ensure balanced usage across crematoriums so that services continue without disruption. In the city, what was that order? And crematorium, the operation has been suspended for temporary basis. If you can just put some. See, I'll just tell you very clearly that crematorium services have not been disturbed or kind of there is no break in this because it's a very important and very essential service. We are having around 27 crematorium in the city, and all these crematorium have all kinds of facility. We also use woods
we also use electricity, like the chambers, and we are having around the 18 such places where we also use the LPG gas. So we are having enough of facilities, like we are able to kind of actually cremate around more than 118 bodies in a day and roughly 2,000 in a month. So only at the 18 places, because of the break in the supply of commercial this LPG, we are discouraging the use of the LPG so that we are not having a kind of a shortage of LPG. But actually we have all the other facilities like the wooden this chamber, and we also have this yeah. So I don't think there is any problem as such, and see, one more problem is there are certain crematorium in Pune city where the load is very high. People go there actually, they prefer maybe by the tradition. But we are having so many crematorium where people are not going, though we have all the facilities. So what we are going to do while issuing the death passes, we'll just try to ensure that the people are they are using all the facilities. It's not only about using certain facilities. If they go to all the places, and there are some crematorium which are very much near the home of those people who need it, but they go to some other places only because of belief. So we are going to create a balance in using those. So there won't be any problem in the city, and I'm sure that Punekars and the Pune city people will have kind of a very comfortable, basically, the facility available for them. Sir, you have also cited some orders, some circular from central government also to prioritize the use of LPG and butane and propylene, which gets used to make LPG. See, normally, what happens when the commercial use gets stopped. So basically, we have to also ensure that all the other things are basically used in a right and proportionate way. So as far as the crematorium is concerned, I mean, we are simply using the same formula, because simple, you should understand that use of LPG for cremating a body is just one of the options. Okay. It's not that, hardly I can say that, 10 to 12% facilities are based upon LPG. Rest of the facilities are based upon electricity and the traditional methods. So that there won't be any issue, and we have ensured that people do not face any problem for it. Thanks. Nishikant Dubey, MP from the Bharatiya Janata Party, has strongly criticized Rahul Gandhi, accusing him of spreading propaganda. Dubey said the functioning of Parliament is guided by the Constitution and referred to Article 94 of the Constitution of India, which outlines the procedure for moving a resolution to remove the Lok Sabha Speaker. He questioned the opposition's demand for an adjournment motion, arguing that once a notice for the Speaker's removal is listed for discussion, other motions cannot take precedence. सदन में तिरंगामा हुआ, सदन नहीं चलने दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी से बड़ा हुरमुट और उछल धक्का, हमारे यहाँ बिहार में एक शब्द है उछल धक्का, विपक्ष का प्रोपगंडा लीडर नहीं देखा, लीडर ऑफ प्रोपगंडा नहीं देखा। आप ये बताओ, टेक्निकल बात, ये देश तो कानून से चलता है ना, संविधान से चलता है। हमेशा लहराते हो लाल किताब की बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसमें आर्टिकल 94, जो संविधान का आर्टिकल 94 है, वो ये कहता है कि आप स्पीकर को हटाने का नोटिस दोगे, स्पीकर के इस पर जो है डिस्कशन होगा, उस रेजोल्यूशन पर डिस्कशन होगा, है ना। अब जब स्पीकर आ नहीं रहे हैं, स्पीकर उस कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं, आप अलग रेजोल्यूशन लेके, अलग एडजमेंट मोशन लेके, आप ये बताओ कि ये फैसला कौन करेगा। स्पीकर को आपने को देखिए, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो किरण रिजिजू जी ने जो पार्लियामेंट में आज कहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है कि यदि आपका स्पीकर बैठ नहीं रहा है, स्पीकर के खिलाफ खुद ही आज लिस्टेड है, रिजोल्यूशन लिस्टेड है कि उनको हटाने के लिए जो है मोशन आपने मूव किया है, उसी कांग्रेस पार्टी ने मूव किया है, तो उस पर बिना चर्चा किए हुए आप दूसरा एडजमेंट मोशन या रिजोल्यूशन कैसे मूव कर सकते हो। ये किस संविधान में लिखा हुआ है, या आपने एक नया संविधान बना लिया है। मुझे लगता है कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का फैसला इस
हुरमुठ आदमी ने या उछल धक्का आदमी ने तय कर रखा है राहुल गांधी ने, चाहे वो राष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे उपराष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे वो सीएजी के खिलाफ हो, चाहे दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ हो, सबके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, सीएजी के खिलाफ कुछ नहीं है। जनता तो कुछ है नहीं, सब इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना है। स्पीकर के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, संसद के खिलाफ, और ऊपर से बेचारे स्पीकर 20 दिन से आ नहीं रहे हैं। आपने देखा कि एक आदमी के जिद के कारण, एक आदमी के एरोगेंट, इंटॉलरेंट एरोगेंसी के कारण क्या स्थिति हो गई है। एक इग्नोरेंट आदमी ने, जिसको कोई जानकारी नहीं है न संविधान की न इसकी, 94 के रहते आप उस रिजोल्यूशन पर चर्चा नहीं कर रहे हो। आप किससे मांग रहे हो जजमेंट मोशन? आप किससे रिजोल्यूशन मांग रहे हो? आप किससे डिबेट मांग रहे हो? हु विल डिसाइड इन द पार्लियामेंट? स्पीकर डिसाइड करेंगे कि नहीं? स्पीकर के अलावा भी डिसाइड करेंगे। तो जब स्पीकर है ही नहीं, आज उनका लिस्टेड है, उसके बाद कांग्रेस यदि बात करती है तो किरण रिजिजू जी ने जो बात कही वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हाईजैक करने की कोशिश है सदन को, सदन कर रही है। अब 20 दिन से स्पीकर साहब ही नहीं है, सदन का कामकाज तो ठप है ना। ये स्पीकर साहब ही तय करेंगे कि लोकसभा कैसे चलेगा। कोई पीठासीन पदाधिकारी की हैसियत नहीं, मतलब उसको कोई कानूनी ताकत ही नहीं है। एडजमेंट मोशन में लिखा है कंसेंट ऑफ द स्पीकर। कंसेंट ऑफ द स्पीकर तब होगा जब स्पीकर फ्री होंगे। स्पीकर को 20 दिन से आपने जो है, आप सरकार के खिलाफ नहीं लाए हो इम्पीचमेंट मोशन, या सरकार के खिलाफ जो है महाभियोग आपने नहीं लगाया है, आपने जो है स्पीकर के खिलाफ लगाया है। तो स्पीकर ही नहीं है तो ये कैसे चलेगा? सदन नहीं चलेगा, और 20 दिन से बंधक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? The share markets in the country opened with a bloodbath on Monday as both benchmark indices declined sharply in the opening session amid a huge surge in crude oil prices and heavy selling across global markets. The Nifty 50 index opened at 23,868.05 points with a decline of minus 582.40 points or minus 2.38%, while the BSE Sensex opened at 77,056.75 with a decline of 1,862.15 or 2.36%, reflecting strong selling pressure across sectors. The sharp fall in domestic equities comes as crude oil prices surged approximately 25% on Monday to USD 116 per barrel amid the ongoing conflict in Asia, which has raised concerns over inflation and economic growth. Market experts said the rise in crude prices could significantly impact the Indian economy, given the country's high dependence on imported oil. Stock market expert Sunil Shah said unless the crude oil prices go back to USD 75 and unless the situation in West Asia is diffused and there is some kind of agreement, it is very difficult for the market to go up from here, because one may see some kind of technical rebound in between, but the undertone is bearish. Let me put it the other way. Unless the crude oil prices go back to $75 and unless the situation in West Asia is diffused and there is some kind of agreement, it is very difficult for the market to go up from here, because we may see in between some kind of technical rebounds, but undertone is bearish. See, the reason is that 70 to 75% our energy needs we import, and high energy prices has direct correlation with the GDP growth of our country. And if GDP growth is not what we have estimated, in that event and in that case, it has impact on the overall corporate India and corporate earnings and corporate top lines. And if they come down because of these inflationary energy prices, then certainly the markets will come down. So it is nothing to do with the current macro, as I've been repeatedly telling, that current macro or the corporate India, but due to geopolitical scenario in West Asia, which is now resulting in high crude oil prices, which can have a huge negative impact on our economy. Is there any impact that you can see on the FII, FDI inflows? Well, it's very, very, I would say, fluid situation.
Nobody knows that where the capital flight will go to and what kind of safe harbor they look for capital. So I don't know, but very difficult to predict anything, because yes, one can predict corporate earnings and make prognosis about capital markets, overall indices and earnings, but this is something nobody can predict. And that was all for this Bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.